Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are doing good and taking your class on daily basis. ठीक है? And hope so you understand your all lectures of every subject. So let's begin the lecture. Before starting, let's read about the poet who wrote the poem. ठीक है? अच्छा, let me tell you one more thing. When we talk about the writer of the poem, so we call him poet. ठीक है? जो poem लिखते हैं हम उसको poet बोलते हैं. And the person who writes the chapter, a complete theory, we call him author. ठीक है? उसको हम author बोलते हैं. So this is different between poet and author. So here we have William Blake, 1757 to 1827. Lived in London for all but 3 years of his life. When he was a young boy, his parents realized that he was most interested in art, so they sent him to painting lessons, and when he grew up, he worked as artist for printer. Blake was a poet, printer, and printmaker. He believed in the equality and wrote poetry that could be understood by everyone. So he belongs to London when their parents realized that their child is more interested in artwork, designing, writing. So what they send them to the house where he learned painting lessons at school. Okay, so where he grew up as an artist. He wrote the poems and he was painting. He did painting and all. ठीक है? So he believed in equality. बराबरी पे वो believe करते थे. So he wrote a poem that was understood by each and everyone. ठीक है? Every caste. The words he used is easy. The echoing green. ठीक है? Echoing green मतलब सब्ज जगह. ठीक है? खूबसूरत जगह. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The sky lark and thrush, the birds of the bush, sings louder and round to the bells' cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. ठीक है? कहते हैं कि अब सूरज चढ़ चुका था. सूरज चढ़ने से आसमान चमक रहा था, खुश नज़र आ रहा था. ठीक है? बहुत सारी बेल्स कैसे रिंग हो रही थी इस स्प्रिंग को, इस खूबसूरत मौसम को वेलकम करने के लिए. ठीक है? परिंदे घूम रहे थे, वो ऐसी आवाज़ें, ऐसे तरीके से वो गा रहे थे जैसे कि कोई बेल बजा रहे हो, खुश कर देने वाली आवाज़ें. ठीक है? और हमारा जो खेल था, जो हमारी स्पोर्ट्स थी, वो देखी जाने वाली थी इस सब्ज़, इस प्यारी सी जगह पे. ठीक है? तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या होता है कि जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उस सीनरी को, उस नेचर को, कि जब सूरज आता है तो कैसे आसमान चमकने लगता है, रोशनी हो जाती है, सब कुछ नज़र आता है, बर्ड्स चहचहाने लगते हैं, बच्चे खेल के लिए आउटडोर. ठीक है? बेसिकली ये आपके आउटडोर गेम्स पे बच्चे निकल आते हैं खेलने के लिए. सो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें यही चीज़ें डिस्क्राइब हो रही थी. नाउ द सेकेंड स्टैंजा. Old John with white hair does laugh awake here, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. Okay. द फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये पढ़ा कि कैसे वो सीनरी को डिफाइन कर रहे हैं और फिर बच्चों की गेम्स को. सेकेंड में दे आर टॉकिंग अबाउट दीज 2 पर्सन, द ओल्ड जॉन और उनकी वाइफ. ठीक है? वो उनको देख रहे थे, उनको देखते ही वो हंस रहे थे उनको देख के. क्यों? क्योंकि दे रिमेंबर्ड देयर ओल्ड टाइम्स, वो अपना पुराना टाइम याद कर रहे थे. ठीक है? द लाफ्ट ऑफ प्लेन सून दे ऑल से सच वर द जॉयस, कि कितना मज़ा आता था जब हम लड़के लड़कियां होते थे, जब हम यंग होते थे और हम इस तरीके से खेलते थे इसी इक्विंग ग्रीन पे, इसी चमन पे, इसी सब्ज जगह पे. यानी वो अपनी यादें रिमेंबर कर रहे थे अपना पास्ट, कि जब हम इतने थे और हम यहाँ पर खेलते थे तो कितना मज़ा आता था, कितना फ्रेश लगता था, कितना सब कुछ अच्छा लगता था. ठीक है? Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descends and our sports have an end. अब क्या होता है? अब जब तक ये खेल लेते. अब क्या हो गया है कि अब सन्स डिसेंस, अब सूरज गायब हो रहा है, छुप रहा है. ठीक है? तो क्या होगा कि अब इनका स्पोर्ट्स भी तो ख़त्म हो जाएगा. राउंड द लिप्स ऑफ देयर मदर. अब इतना खेल के ये थक जाते हैं तो इनके सर अपनी
मदर्स की लैप में, गोद में होते हैं. मैनी सिस्टर एंड ब्रदर्स, ठीक है, लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसे कि बर्ड्स इस वक्त शाम के वक्त जब सूरज ख़त्म होने लगता है तो बर्ड्स शाम के वक्त की तरह चली जाती है अपने नेस्ट में, अपने घोंसलों में चली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि थक जाते हैं सारे दिन चहचहाना घूमना, जैसे कि बच्चे खेल खेल के थक जाते हैं जैसे इस तरह से बर्ड्स भी चले जाते हैं. एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन, और अब और स्पोर्ट्स नहीं होंगी ऑन द डार्किंग ग्रीन, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ग्रीनरी वो नज़र नहीं आ रही. सो this poem was about the outdoor games, ठीक है. In first stanza they have described the scenery, how the sun arises, how the scenario changes, ठीक है. Everyone was happy, the birds were singing, children are playing, the old one who came to enjoy sitting under the tree, who came to enjoy and seeing the child's while playing, they remember their own time when they were young, when they were girls and boys and they were used to play with their friends, ठीक है. And the third stanza, they came to the end that in this stanza they describe that the one son's descends वो गायब हो जाता है, so the childs go back to their homes, ठीक है, and sleep at home or sit with their mothers. Like the birds, at the evening they also gone to their nest for the rest, ठीक है. And no more sports scenes because they are darkness, और darkness में कोई नहीं खेलता, ठीक है. Hope so you understood the poem. Take care. Allah Hafiz.